Hello students, welcome to Learn Easy classes. Today we will discuss some important question based on the previous lecture. You can evaluate yourself here. So we will start now. First question is, the term cell was given by Leeuwenhoek, Robert Brown, Robert Hooke, Fleming. Yes, right answer, Robert Hooke. Who proposed the cell theory? Schleiden and Schwann, Watson and Crick, Darwin and Wallace, Mendel and Morgan. Yes, Schleiden and Schwann. The longest cell in the human body is nerve cell, muscle cell, liver cell, kidney cell. Nerve cell. Genetic material of eukaryotic cell is contained nucleolus, nucleus, nucleoplasm, nucleoid. Yes, right answer, nucleus. Very good. Cytoplasm is unit of mass of protoplasm. Protoplasm excluding plasma membrane, protoplasm excluding plasma membrane, and nucleus. Protoplasm excluding plasma membrane and cell organelles. प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. सो साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइजिंग मशीनरी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम. यस, राइबोसोम्स. Protein storing plastids is aleuroplast, amyloplast, alloplast, both B and C. Aleuroplast. Mitochondria site of aerobic respiration, Krebs cycle of aerobic respiration, glycolysis of aerobic respiration, anaerobic respiration. Yes, aerobic respiration जहाँ पर कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और जो कहाँ कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में. Nucleus is a site of protein synthesis, ribosome synthesis, enzyme synthesis, mRNA synthesis. Ribosome synthesis, ribosomes कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस. और न्यूक्लियोलस कहाँ पर था? स्मॉल स्फेरिकल सॉलिड जो पार्ट था न्यूक्लियस के अंदर. So nucleus is also situated in nucleus. And what happened in nucleolus? Ribosome synthesis. Lysosomes are called suicidal bag, digestive bag, demolition squad, all the above. Suicidal bags because lysosome digests itself. Centrosome occurs in plant cell, and some lower plant cell, all the above. Animal cell, right answer, animal cell. क्या फंक्शन है सेंट्रोसोम का? Centrosome help in cell division. The only cell organelle seen in prokaryotic cell, mitochondria, ribosomes, plastids, lysosomes. Ribosomes. इसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता. Cell arises from pre-existing cell was stated by Haeckel, Virchow, Hooke, Schleiden. Virchow. Yes, this is the right answer. Kitchen of the cell is mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. Chloroplast. क्यों kitchen of the chloroplast को हम कहते हैं? Because photosynthesis की जो process होती है वो chloroplast में ही complete होती है. So that's why chloroplast is called the kitchen of the cell. Organelles without a cell membrane is ribosome, nucleus, mitochondria, chloroplast. Ribosome. Yes, right answer is a ribosome. बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं. न्यूक्लियस भी, क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी. The protein and lipid essential for building the cell membrane are manufactured by endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, peroxisomes. Yes, right answer है endoplasmic reticulum. Chromosomes are made up of DNA, protein, DNA and protein, RNA.
डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से मिलकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। Organelles other than nucleus containing DNA is endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi apparatus, lysosomes. Yes, mitochondria is the right answer. Cell wall of which of one of these is not made up of cellulose? Bacteria, hydrilla, mango tree, cactus. Yes, bacteria. Bacteria cell होती है जो कि cellulose की नहीं बनी होती। Nucleus is discovered by Robert Hooke, Robert Brown, Birch और Schleiden. रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की वो रॉबर्ट हुक ने की थी।